11-year-old Sangita Singh is not your average Indian schoolchild. She already has a reputation for making politicians nervous. For the past 2 years, the budding journalist has used the power of her pencil to shed light on the sorrows and struggles of the South Delhi slum she calls home. This week's headline: Trash turns toxic in the summer heat. मैंने ये पेपर इसलिए बनाया था क्योंकि बहुत से ऐसी गंदी जगह है यहाँ पर मक्खी मच्छर भिनकते हैं और मैंने नोट किया इस बात को कि आगे जाके कहीं किसी को बुखार कहीं मलेरिया. Sangita is one of several young reporters from Sangam Vihar, a shanty town composed of 100,000 migrant squatters. Each week, slum children as young as 5 gather to write for Udayachal, a youth-run quarterly newspaper about issues affecting them, from bad drinking water to child marriage. Their mentors? The original crop of young journalists who started the paper 5 years ago. The first edition was no more than handwritten sheets slapped onto a local bus stop. Now, with training from 2 NGOs, Kalyanam and Gandhi Smitri, slum kids put out a digitally mastered 4-page news sheet. Their daily assignment: open their eyes and walk outside. यहाँ बहुत सारा कूड़ा है और कितना कचरा है. आप यहाँ पर देख रहे हो कितनी मक्खियाँ भिनक रही है, कितनी घिन आ रही है और मेरा तो मन कर रहा है उल्टी का. मेरे को यहाँ पर खड़ा होने का दिल नहीं कर रहा और यहाँ इतना कूड़ा है कि मैं कुछ कह नहीं सकती. आई मीन यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बीमार पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए. बड़े लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए इतनी कचड़ी नहीं होनी चाहिए. NGO reports indicate 20% of the so-called rag pickers in Sangita's slum don't live to see their 5th birthday. Early on, Sangita was tasked with raising her younger brother, also a young journalist, and sister, while her mother worked long hours as a seamstress. She tackles each story with their well-being on her mind. यहाँ इतनी सारी गंदगी है, कूड़ा है, बहुत सी चीज़ें हैं. यहाँ पर बहुत से बच्चे या फिर कोई भी बीमार पड़ सकता है. क्या पता कल को मैं ही बीमार पड़ जाऊँ या फिर मेरे बहन भाई. हर कोई बीमार पड़ सकता है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर. Her first interview is with a 22-year-old migrant, Duli Sarkar, whose 2-year-old son Suman is almost always sick. Sangita suspects the toxic trash is the culprit. आपको क्या परेशानी होती है आपके बच्चों को पालने में? समय के ছেড়ে দিই, মা বাপকে ছেড়ে এসেছি, পয়সা করে নেই, শাশুড়ি সব কাজে গেছে, বাবাদের মাদের ছেড়ে সব এসেছি. মাছিও এখানে ভাত খাওয়া যায় না, গন্ধ, জল পাওয়া যায় না. अच्छा आप रोइए मत, ऐसी कोई बात नहीं है. आप रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होगा. Non-profit groups have been trying to clean up the slum, but most residents admit they don't listen to outsiders. But, says R.B. Prashant, director of the community group Kalyanam, which supports the paper, slum residents have been receptive to the children. When they see the articles written of their own communities with the problems by their own children, and they go for that national newsletter and they never see any information about their own community, even though lot of problems are faced by them. So they are very much happy and they also see the solution also. 2 years ago, Sangita was just another kid playing in the dirt. Until, says Udayachal organizer Mr. Prashant, she was inspired by the paper's ability to make local cops take action after her neighbor was killed in a fight over gambling debt. Police reacted very fast by seeing this, that it has come that in the community newsletters and that it is written by the children. Otherwise that police always take the money and they don't take any actions. Armed with evidence that her work matters, Sangita approaches a 12-year-old who has been left to care for her infant sibling. In this 5-month-old, Sangita has found inspiration for her next story topic: child malnutrition.
As the slum population grows, Sangita says it is her job to get people to wake up to the fact that their living conditions are not normal. ये जुगी में हम जो गए हैं, हम दोबारा जाके देखेंगे, मौका मिलेगा तो वहाँ पर कुछ बदलाव आएंगे। और कूड़े कचरे यहाँ पर हमने घूम के देखा है, वहाँ पर कुछ साफ नज़र आएगा। बच्चे अच्छे ढंग के बने रहेंगे, ज़्यादा बनियान चड्डी नहीं, मतलब कि सही से बन के रहेंगे। उनकी मम्मा ज़्यादा मतलब कि कुछ भोजन नहीं करा पाती, उनके घर में भोजन होगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर हुआ है। Sangita's work has already inspired community leaders to launch nutrition and hygiene workshops for new mothers. For Sangita, that is only the beginning. बड़े होके मैं करना चाहती हूँ बहुत सी चीज़ें, गरीबों की सहायता, यही सब, और एक हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ गरीबों के लिए। बहुत सी चीज़ें करना चाहती हूँ ताकि उनकी मदद हो पाए और वो ये सोचे कि हाँ कुछ हमारे लिए सोचते हैं। 1 minute. Such aspirations make it easy to forget this star journalist is not even a teenager. That is, until you catch a glimpse of her unwinding after a hard day's work.